हे दोस्तों, समीर व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो। अगर आपको ट्रैवल, लाइफस्टाइल और डेली व्लॉग्स पसंद हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको मिले सबसे पहले हमारी पूरी नए वीडियो की अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इंडिया से श्रीलंका घूमने का अप्रॉक्सीमेट खर्चा कितना आता है। खर्चा का एस्टिमेट काफी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे आप कौन से शहर से ट्रैवल करते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एटसेट्रा। ट्रिप की ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आपका ट्रैवल स्टाइल, बजट, मिड रेंज, लग्जरी, सीजन, पीक या ऑफ सीजन। चलिए अब एक टिपिकल 6-7 दिन के ट्रिप का ब्रेकडाउन देखते हैं। पहला, फ्लाइट कॉस्ट, इंडिया टू श्रीलंका। मेजर इंडियन सिटीज से कोलंबो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती हैं। राउंड ट्रिप फ्लाइट कॉस्ट बजट एयरलाइंस 12,000 से 18,000 रुपये अर्ली बुकिंग, रेगुलर एयरलाइंस 18,000 से 25,000 रुपये। चेन्नई या कोची से फ्लाइट सस्ती पड़ी है क्योंकि यह सिटी श्रीलंका के करीब है। दूसरा, वीजा फीस, श्रीलंका के लिए ए वीजा ETA अप्लाई करते हैं। कॉस्ट टूरिस्ट वीजा अप टू 30 दिन, 1500 से 2,000 रुपये अप्रॉक्स। ऑनलाइन अप्लाई करने पे आसानी से मिल जाता है। Accommodation options vary widely. For budget hotels or hostels, you can expect to spend around 800 to 1,500 rupees per night. If you prefer mid-range hotels, the cost ranges from 2,000 to 5,000 rupees per night. And for those looking for luxury resorts, prices can go from 7,000 to 15,000 or more per night. So, for a 6-night stay, a budget accommodation would total around 5,000 to 9,000 rupees, while a mid-range stay would cost approximately 12,000 to 25,000 rupees. Let's talk about food costs. Local food like rice, curry, and kotu roti is quite affordable. If you're on a budget, your daily food expense will be around 300 to 500 rupees. For those who prefer mid-range restaurants, you might spend between 700 to 1,200 rupees per day. So for 6 days, your food cost would be roughly 2,000 to 6,000 rupees. Now, let's discuss local transport. Public buses, tuk-tuks, and trains are very popular. Car rentals and private taxis are also available. For public transport, you might spend around 1,000 to 2,000 rupees in total. If you opt for a private cab for full-day sightseeing, it could cost you between 2,000 to 5,000 rupees per day. Exploring cities like Colombo, Kandy, Ella, and Gal by train is a great option. Alright, so let's talk about sightseeing and activities. When you're in Sri Lanka, there are so many amazing places to visit and things to do. You can explore beautiful temples, go on a wildlife safari at Yala National Park, relax on stunning beaches, or even hike up Adams Peak and Sigiriya Rock. For these activities, the entry fees range from around 200 to 1,000 rupees per place. If you're into adventure sports, you can try surfing, snorkeling, or whale watching, which will cost you an additional 2,000 to 5,000 rupees. So in total, you can expect to spend approximately 2,000 to 7,000 rupees on sightseeing. Now, let's move on to other costs you might incur during your trip. First off, getting a local data SIM card will set you back about 500 to 800 rupees. Then, there's the cost of souvenirs, shopping, and tips, which can add up to an extra 2,000 to 5,000 rupees. So, make sure to budget for these additional expenses as well. Alright, let's break down the total estimate for a 6 to 7 day trip. For a budget traveler, here's what you can expect. Flight, round trip, will cost around 12,000 to 18,000 rupees. Visa fees will be about 1,500 to 2,000 rupees. For a stay of 6 nights, budget around 5,000 to 9,000 rupees. Food will cost you approximately 2,000 to 3,500 rupees. Local transport will be around 1,000 to 2,000 rupees. Activities and sightseeing will be in the range of 2,000 to 4,000 rupees. And for miscellaneous expenses, set aside 2,000 rupees. So the total for a budget traveler will be around 25,500 to 40,000 rupees. Now for a mid-range traveler,
Flight, round trip, will be around 18,000 to 25,000 rupees. Visa fees remain the same, 1,500 to 2,000 rupees. For a stay of 6 nights, budget around 12,000 to 25,000 rupees. Food will cost you approximately 4,000 to 7,000 rupees. Local transport will be around 5,000 to 8,000 rupees. Activities and sightseeing will be in the range of 5,000 to 8,000 rupees, and for miscellaneous expenses, set aside 4,000 rupees. So, the total for a mid-range traveler will be around 50,000 to 80,000 rupees. Now let's talk about some important tips for your trip. Currency. 1 Sri Lankan rupee is approximately 0.25 Indian rupees, but do check the latest rate. Weather. The best season to visit is from December to April, though it might be a bit expensive. From May to September, the rates are slightly lower. Best cities to visit include Colombo, Kandy, Nuwara Eliya, Ella, Bentota, Gaili, and Marissa. For shopping, tea, spices, handicrafts, and gems are quite famous. You can customize your itinerary based on your budget and interests. If you want, I can also create an example itinerary, a day-by-day plan for you. Would you like me to suggest a 7-day itinerary? तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें समीर व्लॉग। अल्लाह हाफिज।